Good morning, everybody. Can you hear me? Can you all hear me? Good morning, students. So we are here for a very interesting session. So this session would be one of the most interesting ones you will find, and you will enjoy a lot. Though it will be related to studies, but you will never find that you are studying, right? And we welcome all teachers and students to this unique session on memory techniques. So today we'll discuss about this unique session on memory techniques. So we are just going to begin in a minute or two. Okay. I hope now the voice is clear, everybody. I hope the voice is clear. Yes, students, you can write in the chat so that we go ahead with the session and make studies a fun. Okay, that's fine, great. So, children, what we will be discussing today, as I discussed, some shortcuts on calculation and memory techniques. And I thank Principal Sir for giving us this opportunity to present before you a small workshop on this unique concepts. So here we will be using the concept of right brain, and once you get on with the studies and all, as we go ahead, you will enjoy the session. Alright, so when it comes to learning, there are two things. One is learning part and another is retention part. पर सबसे मुश्किल क्या होता है? लर्निंग फिर भी हम कर लेते हैं. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज रिटेनिंग, एंड द प्रॉब्लम इज सबसे ज्यादा जब जरूरत होती है एग्जाम में तभी हम भूल जाते हैं. ठीक है? सो दैट इज वेयर दिस मेमोरी फॉल्टर्स अस. सो टुडे विल टीच यू टेक्निक्स हाउ टू लर्न एंड नॉट फॉरगेट. ठीक है? कैसे याद करेंगे और हम भूलेंगे नहीं. तो बस अब हम शुरू करने वाले हैं गाइज अपना सेशन. एंड वन ऑफ द यूनिक सेशंस बिफोर दिस, एंड ओके. Right, and using these techniques, what you can do, you will just witness, we'll show you a very small clipping also in between to make you believe how things can be, right? So we go ahead with our vocabulary section, right? We'll go ahead with our vocabulary section. GK section will come to calculations also, right? So we'll go with a very simple concept of a country called Albania. You might have heard this is a country in Europe. So we'll go ahead, and this workshop is uniquely for Birla School Pilani, right? And whatever the concept which we'll be teaching are useful for all this examination. So right from class 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, NTNC, Olympiad, Hotel Management, NIFT, banks, any exam you name, they will be required, right? So now we go ahead and discuss some concept where we'll discuss with you some important things. Now there's a country called Albania. There is a country called Albania, and it's an important country in Europe, right? So if you read about Mother Teresa, you will find some connection there also. Now suppose you were to learn कि अल्बेनिया का कैपिटल क्या है. अल्बेनिया का कैपिटल क्या है?
तो जनरली क्या होगा, अल्बेनिया तिराना, अल्बेनिया तिराना, अल्बेनिया तिराना, यही याद करेंगे। लेकिन अगर थोड़े टाइम बाद कोई आपसे पूछेगा अल्बेनिया का कैपिटल क्या है, तो फॉर श्योर हम भूल जाएंगे। सो टुडे विल गिव यू यूनिक वे टू लर्न दिस कैपिटल एंड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ राइट ब्रेन। तो आज आप रहिए और आपको हम दिखाते हैं कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब अल्बेनिया, अब मैं अगर आगरा बोलता हूं तो मोमेंट यू हियर आगरा यू गो टू ताजमहल, ताजमहल। लेकिन अल्बेनिया सुनते ही दिमाग में कुछ नहीं आता बिकॉज वी हैवंट बीन टू देयर। सो टुडे विल मेक इट इंटरेस्टिंग। अल्बेनिया, अब हमारे पास कोई वहां की इमेज नहीं है, कोई ताजमहल की इमेज नहीं है। कैन वी मेक समथिंग लिटिल विट्टी एंड लर्निंग फ्रॉम सम आलू प्लस बनिया? बट व्हाट हैपेंस कि बनिया डजंट हैव ए इमेज, तो हम इसको सिंपल कर देते हैं आलू प्लस, यस व्हाट वी विल मेक इट, आलू प्लस बनियान। हाँ जी, एक आलू भाई साहब हैं जिनकी बनियान या आपकी बनियान आलू पहन के चले जाता है और आपको गुस्सा आ जाता है। सो व्हाट डू यू डू? गुस्से में ये क्या है, तीर। सो तीर आना विल रिमाइंड यू ऑफ तिराना। तो जैसे ही आपको गुस्सा आता है आप उस पर तीर चला देते हो। दिस इज रिडिकुलस प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। आप याद करिए, अगर नॉर्मल चीजें होती हैं हम भूल जाते हैं, पर ऐसी चीजों को भूलना बहुत मुश्किल है। सो अल्बेनिया का कैपिटल है तिराना। सो लेट अस सी हाउ विल रिमेंबर इट। सो दिस इज आलू एंड दिस इज द बनियान and see tir ana. So tir ana will remind you of which place, children? Tir ana. Tir ana will remind you of Tirana. So that was Albania का कैपिटल तिराना, right? इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेट्स डिस्कस। एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है हम देखते हैं। उस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला, जहां अभी इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही है। वेनेजुएला से एसोसिएटेड यू विल फाइंड एंजल्स, द ग्रेट वाटरफॉल। तो वेनेजुएला एक कंट्री है। अब वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस भी काफी चल रही है। वेनेजुएला का कैपिटल की बात करें तो क्या कैपिटल होगा वेनेजुएला का? हाँ जी, वेनेजुएला का जो कैपिटल है वो है कैराकस। यस, कैराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। आसान नाम नहीं है, याद नहीं रहेगा, तो हम अपने स्टाइल से कैसे याद करेंगे? एसएसटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, कुछ भी हो, you can learn using this methods. We have mastered the techniques and made entire programs whereby we can make you learn all this, right? इसको वेनेजुएला, can we make it van plus झूला? वेनेजुएला, can we make it van plus झूला guys? Yes. और आप वैन में झूला झूल रहे हैं, आप वैन में झूला झूल रहे हैं। और कौन आती है? कार आती है। कैराकस क्या लेके आती है आपके लिए? खूब सारा कैश। बल्ले बल्ले हो गई आपकी। वैन में झूला झूल रहे थे, अचानक एक कार आई, आपसे क्रैश हो गई और उसमें खूब सारा कैश था। कैराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। So this is van plus झूला for you guys. This is van and झूला for you, and that is Caracas, right? Okay. We'll move on to capitals के बाद some vocabulary also. We'll definitely go to that also. We'll have a very good vocabulary coming up.
So we'll leave some countries and we'll take up some interesting. Okay. So what we'll do a small word with you. Okay. And the word is conjugal. So the word which we are doing is conjugal. So there is a word which is conjugal. And what does conjugal mean? Conjugal basically means related to marriage issues. So conjugal means it is related to marriage issues. So what is conjugal, guys? Something related to marriage issues. So sometimes back, Hrithik Roshan and Suzanne had conjugal issues. So what do you mean by conjugal issues? Conjugal means related to marriage issues. So this is a word in vocabulary. How do you remember this? So we'll make something interesting. Conjugal. Normally जुगल बंदी हम कहते हैं, but we will not use that as does not have an image. तो हम क्या करते हैं, इसको cone बना लेते हैं guys, and plus jug. You know what is a cone? Cone और jug दोनों बेचारे अकेले होते हैं, कहते हैं हमारे से कोई गर्ल इंटरेस्टेड नहीं है मैरिज में, so why don't we get married? So then cone and jug decides to get related to each other by marrying. So conjugal is related to marriage issues. Conjugal is related to marriage issues. Okay, so let's have a watch of this and see how interesting that can be made. Okay, here is conjugal for you. Okay, now will we move on to some calculation part. So अब जब भी conjugal आएगा, the image has been created and you will be easily able to use the word and remember it for some time. So now let's go ahead with some calculation part which we would be doing. So we'll be doing this simple concept of multiplication with 9. I hope you can see the board clearly. Multiplication with 9 in a very simple way. And what is that simple way? There are 4 cases when you multiply with 9. So we'll teach you when both 9s are same, right guys? So we go ahead and share with you. We'll show the steps later on. Now, what is the method and which all numbers the same concept can be extended? So here we are multiplying same 9s. We'll go with different 9s and the same concept can be extended to large number of this. So suppose you want to multiply 2 9s. So what you need to do? You need to see the number of 9s in the left. So we'll consider only this pair. The number of 9s in the left are 2. So in right, 1 less will come. So the first digit would be 9. Followed by a 8 always. So you will always have a 8 out here. You will always have a 8 out here. Then how many 9s are out here? 1. The number of 9s which you get in RHS will be same as the zeros. So jitne 9s आएंगे उतने ही 0 आएंगे. So since there is only 1 9 in the right, you will have 1 0 and it will always end with 1. So simple answer is 9801. So now let's come to this number. You will be more clear. We have 1 2 3 9s. So in RHS we will just have 2 9s followed by a 8. How many zeros you will have? 2 zeros and followed by a 1. So that is the simple answer 998001.
Now suppose you have 4 9s coming up here. So how do you write that? 4 9s means you will have, yes, only 3 9s here, 1 9 less, followed by a 8. And how many? 3 9s. So zeros would be same as the number of 9s in RHS, followed by a 1. So I hope you are clear with this concept. Are you clear with this concept? Okay. And the last one, if you will see, so you will have 5 9s, which is just 4 9s, followed by a 8, and the same number of zeros followed by 1. So that is how it goes with the 9s. So that is how you multiply the same number of 9s and you get the answer. Right? So the concept is that this digit, the second one and the fourth one, remains same. The second one and the fourth one remains same. So it's the first and the third digit you keep on changing. I hope all of you are clear. We'll move ahead with such more concepts. Right? So now we'll go ahead and discuss this simple concept. Now the 9s are same as the number of digits. Number of 9s utne hi hain jitne number of digits hain. So 9 9 into 4 2, or it can be 999. So both will have same. So the answer is just a one step. So you leave the 9s right here, minus 1 just. So you'll get 41. Simple. That is the answer. Now what you get the remaining two digit, just 99 में से subtract. So you will get 8 and 5. So your final answer is 4158. Right? So 4158 is the answer. So if it is 67 out here, you write 66. Just write 66, one less. And now what you do? Just subtract. How did you get this? Minus 1 and subtract it. So you'll get 3 and 3. 9 minus 6, 3. This 3. So you'll get 6633. So that is how simple this concept can be performed. Right? Then you can have this. So you will have 1, 2, 2. 123. So you'll have 1, 2, 2. And then when it comes to 9, 9, 9, you will have 7. You will have 7 and a 8 out here. So the answer is 122877. Good going, guys. Good going. Yes, we'll come up with more concepts like this. Right. And as a simple one, you will just have 6, 4, 5, 2. That is done. Now what do? You just write this 9, 9 here and subtract. So 7, 4, 5 and 3. So that is the simple concept. 6, 4, 5, 2, 3, 5, 4, 7. So that is what you get when the number of 9s are same. I hope you all got the concept. Right. So now we will go ahead and do these questions when number of 9s exceed. जब number of 9s ज़्यादा हो जाते हैं, so how do you go about doing this? So the first step remains same, 67. So you just write a 66. That is as usual. Now this has 2 digits and this has 3 digits. So how many 9s are extra? Actually 1 9 is extra. So just write that 9 here. Just write that 9 here. So you break like this. The digits go. First 2 digits would be 67 minus 1. Then a 9 comes because 1 9 is extra. What would be the last 2 digits? Just subtract from 99 this number. 3, 3. So the final answer would be 66933. So same concept can be applied here. 81. Simple. 3 9s. So 1 9 extra. What would be here? Just subtract from 99, 8 and this. So 81918 is the answer. That is how it goes. So same we can see here. 234. So first write 233.
4 nines and this has 3 digits. So again only 1 9 is extra, so write it. So what would be out here? 6 6 7. So you'll get 233 9766. Right? So that is how we get this concept. So that is how you go about doing this. Now here what happens, we have 4 9 and only 2 digits. So what do you need to write? Just write 63. Finished one part. Now here 2 and here 4 9. So we have 2 9 extra. So just write 99. Concept gone. Now simple. How do you get the last 2 digits? 9 minus 3 is 6 and answer. So 639936 is the answer. Right? Okay, and then one more example out here where we have 5 nines and only 3 digits. So it is 122. And when you have 5 digits and 3, so there are 2 nines extra. So just put the 2 nines over here and what will you get? How do you get this number? Just subtract from 999. So 778. So you get 1229987. So that is the simple way. And here you have 5 nines and just 2 digits. So write 66. 3 nines are extra. You just have a 2 digit out here. So 3 nines extra, write it. So the first part, second part. And when you subtract from here, you will get 33. So answer is 669933. Right? So this is how the multiplication can be done simply. And if number of nines are less, then we actually have a shortcut, but the method, the other one would be much better, which we generally follow. So here you have 2 nines and there are 3 digits. So what you have to do, you just have to, how many nines? 2. So just add 2 zeros to this number. Just add 2 zeros to this number. Right? Is it clear? And subtract the same number. You'll get the answer. So you'll have 10 minus 3 this, 9 minus 6 this, right? So 10 minus 7, 3, 9 minus this. So 16533 would be the answer. That's the simple one. So here 182, how many nines? 2. So just add 2 zeros and subtract 182, right? So you'll have this, right? 0 and 18. 18018. That is the simple thing when nines become less. So you just have to do this. So here there are 3 nines. So this will be 1, 2, 3, 4, 000 and minus 1, 2, 3, 4. The same number. So you'll get a 6, you'll get another 6, you'll get a 7, right? So that is what it is. Here you will get 2, you will get 3, 1, 2. That is the simple answer. Got it? So this is what you can do with nines. It becomes comparatively easy to do, right? So now we'll teach you one-liner how to write square of a number. So when you're dealing with a big number, how do you write squares? So for example, you have 107 square. 107 square. So you divide it into 2 parts. दो part में divide कर लो. एक तरफ 1, एक तरफ 7. So what is here?
1 square. So 1 square will write as 2 digits, so you'll get 0, 1. It doesn't make any difference, 0 comes. What is 7 square? So 7 square is 49. So just write 49. And what will come in middle? 1 into 7 into 2, 14. So just write 14. So your final answer is 11449. So if you are finding 107 square, that is the one step you need, 1149. Now for example, it is 109 square. So just separate it like this, 2 parts. So what is 1 square? You will get 1. What is 9 square? You will get 81. What is 1 into 9 into 2? 1 into 9 into 2 is 18. So that is what your answer comes. 11881. 11881. Okay. So for example, we are doing 203 square. So 203 square. Separate it. So what is 2 square? 4. What is 3 square? 9. Right? And what is 2 into 3 into 6 into 8? 12. Right? So what are you going to do, bache? When you have this 3, you have to write it 09. So that is how it should come, 2 digits, right? So 41209. Right? Got the answer? Good morning, Nitin. Good morning. Now just try 202 square. So 2 ka square 4. 02 का square you will write 04. See, there has to be 2 digits. That's why I'm saying. यहाँ पे problem नहीं थी क्योंकि 7 था, 49 आ गया. 2 into 2 4. 4 into 2 8. अब single रह गया ना, 2 digit आने चाहिए. See, the concept goes everywhere 2 digits. 04 08. ये 0 का तो कोई मतलब नहीं होता. That is why we have this. So 40804. Answer देखो यही आ रहा होगा. Now suppose you are finding 208 का square. So 2 square I'll write 4. अब तो 8 है, 64. 2 into 8 16 into 2 32. So ये नंबर कैसे आया? 2 into 8 into 2. आंसर आ गया 432 64. So बड़े नंबर्स का स्क्वायर you will do like this. और देखते हैं, we can extend this concept. There's no problem. राइट इसको हम और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं और नंबर्स हम कैसे निकालें. आप 303 का स्क्वायर ट्राई करिए. नाउ 3 का स्क्वायर इज 9. 03, सो विल हैव 9, सो विल राइट 09 चिल्ड्रन हियर. 3 into 3 9, 9 into 2 18, सो द आंसर इज 91809. इससे फास्ट नहीं हो सकता. नॉर्मल मेथड कैसे चलेगा भाई? नॉर्मल मेथड तो ऐसे चलेगा और इसको करने में आपको पता है कितना टाइम लगेगा. ओके 309 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 09 का 81, 3 9s are 27 into 2 54. So 95481. I hope you guys are enjoying. कोई मजा आ रहा है guys? So there are so many concepts which I can teach and do. Cube roots up to 1 crore in one line, square roots, perfecto, imperfecto. Only thing is you need to focus. तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, yes guys, we'll go ahead. अब देखो 408 का स्क्वायर निकाल लो. क्या करेंगे 408 का स्क्वायर? 4 स्क्वायर कितना होता है? 16. इसका 64. 4 8s are 32. 16 64 64. ठीक है. 507 का स्क्वायर निकाल लेते हैं. 507 का स्क्वायर अलग कर लो. 25 49 70 5 7 35 257049. आ रहा है समझ? 708 का स्क्वायर निकाल लो. 7.08 का स्क्वायर निकाल लेते हैं. 708 छोड़ो.
अभी पॉइंट को भूल जाओ, अगर इनमें पॉइंट आता है पॉइंट को भूल जाओ। पहले आप 708, तो 2 पार्ट किया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर, दिस इज 7 का स्क्वायर, दिस इज 8 का स्क्वायर, 7 इंटू 8 56, 56 का डबल, ठीक है, करके देखो 11264। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है गाइस, दो प्लेसेस जो थी यहां पे आपने 3 लोगों को बिठाया है, आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज अ प्रॉब्लम, सो आई सेड ओनली 2 पीपल कैन कम इन द बॉक्सेस। तो अब आपको यहां देना है 7 के जगह 49 बैठ गया, वेरी गुड, 8 के जगह 64 बैठ गया, पर जब आपने 7 इंटू 8 इंटू 2 किया 112, तो यहां जगह तो 2 ही की है, तो ये 1 बाहर आ जाएगा और ये 1 को अब इसके नीचे लाना पड़ेगा। सो यू विल हैव दिस 1 कमिंग डाउन, वी कैन नॉट मेक इट सेट हियर, सो व्हाट यू विल सी 50, ठीक है, 1264। अब आप चेक करके देखो, ये 112 3 डिजिट नहीं बैठ सकते, तो जब एक्स्ट्रा आ जाए उसको हमें बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में दोनों में 2 की ही जगह होती है। सो यू गॉट इट, हाउ यू हैव टू टेक केयर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2? तो that is the concept of 2, this 112 will not be there। अब आपको समझ में आ गया कि जब 3 डिजिट आती है तो आपको this is how you have to do it। I hope all of you are clear। सबको क्लियर हो गया गाइस? Okay, I'll explain this once again। When we are finding 708 square, so as I said, make like this, only 2 places to sit, everywhere only 2 places to sit। I hope ये देखो, तो 7 का स्क्वायर 49 आके बैठ गया, 8 का स्क्वायर 64 आके बैठ गया, 7 इंटू 8 इंटू 2 112 ऐसे बैठेगा, पर हम किसी को बाहर नहीं बिठाते, तो हम कहते हैं भैया आ जाओ घर के अंदर नीचे बैठो, तो इस 1 को फिर हम यहां ले आएंगे, तो ये 1 यहां से कट जाएगा, 0 और एक रिमाइंडर यहां गया 9 प्लस, तो ये 50 हो गया, ये 12 एज इट इज, ये आंसर आएगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर। हाँ मोनिका बच्चे, आपको क्लियर हो गया नाउ? इज इट क्लियर? ओके guys, subscribe if you want, and we have the sessions going on exclusively, and if you guys like, every week we'll give you 1 session complimentary exclusively for Birla Public School students पिलानी। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, हम ऐसी चीजें जितनी और हैं हम कराएंगे और आपको बताएंगे। चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं गाइस, आपको एक और ऐसा मेथड बताता हूं, आपको किसी को नहीं आता होगा, फ्रैक्शंस ऐड करने का। आज आपको हम फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सो 8 से एग्जांपल -3 2/7। अब इसका नॉर्मल मेथड पहले देखो और फिर 1 लाइनर 1 स्टेप मेथड देखो। इसको नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे, 8 - 21 और ये 23/7 ऐसे ही होगा, 8 - 23/7। सो एलसीएम लेंगे तो 56 - 23/7, ठीक है, तो ये 33/7 आ जाएगा, 33/7। और 33/7 को जब आप करेंगे 7 4 28 और 5, ठीक है, तो ये इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी राइट इट 4 5/7, ठीक है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5/7 कुछ आगे। इसका 1 लाइनर मेथड देखो क्या है। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। गाइस बताओ, अगर आपको कोई पूछता है कि 7/7 कितना होगा, 7/7, मैंने बहुत बच्चों को देखा है बोलते हुए कि 7 होगा, कितना होगा 7, गलत। अगर मैं इस प्रोसेस से भी करूं तो 7 × 7 + 7 / 7, सो 49 + 7 / 7, 56/7 8 होगा। पर आज आपको सीखना क्या है वो समझो। 7/7, अब जैसे 7 1/2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + ½ ठीक है ना,
7 प्लस हाफ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 7 एंड हाफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब ये, तो 7 7/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल। 6 9/9 कितना होगा, 6 प्लस 9/9, सो दैट इज अगेन 6 प्लस 1 दैट इज 7, ठीक है। Right? So now let us learn how to find using this as a shortcut. Step समझो guys, 8 minus 3 2/7. So what is in the denominator makes a difference. आपके पास 7, तो इस 8 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को 7 7/7, हमेशा एक कम करके देखो, 7 7/7, जस्ट राइट दिस, खत्म, आंसर आ गया। क्योंकि 7 7/7 का मतलब ही है 7 प्लस 1, ये देखो जस्ट सी 7 7/7 इज 8। अब देखो व्हाट इज 7 माइनस 3 गाइस, 4। 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, खत्म। और 7 माइनस 2 5, और नीचे क्या है 7, सो 4 5/7 इज द आंसर। आई विल गिव यू मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो कि एसएससी, बैंक, पीओ कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। So I'll teach you today some more interesting things coming up, and I said for Birla School we will have this exclusively every week if you guys desire. आपको अगर अच्छा लगता है आप बोलिए, हम आपके लिए exclusively लाएंगे। So like, subscribe guys, and let's go ahead. Now I'll give you some more questions like 9 minus 5 3/7 for example. So now see there is a 7, so what you will write, 9 के जगह 9 से एक कम 8 7/7. So whatever the number is उससे एक कम लिखो और फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में है 7, अगर 9 होगा तो 9/9, 8 minus 5 8 minus 5 3 लिख दो, 7 minus 3 4 और नीचे 7, so 3 4/7 is the answer. Right? Okay. Now let me give you some good questions. थोड़े 23 minus 2 5/9. 23 अगर तुम इसको नॉर्मल मेथड से करोगे बहुत टाइम लगेगा। 23 minus 2 5/9, तो इसको 22 लिखो, नीचे 9 है, write it guys, 22 9/9 minus 2 5/9, समझ में आ गया, right। 22 minus 2 10, 9 minus 5 4, तो 10 4/9। आगे आंसर गाइज, आर यू गेटिंग इट। So 137 minus 3 5/8। अब इसको नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे बहुत टाइम लगता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम थोड़ी देते हैं। बैंक, पीओ, एसएससी, एनटीएससी कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा दे विल नॉट गिव दिस मच टाइम। 136 कर दो 8/8, 136 minus 3 133, 8 minus 5 10, 133 3/8। Okay. Now see, suppose you have to do 93 minus 42 5/9, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे गाइस, यहां 9 आ गया ना, तो अब एक कम करना है, एक कम करो तो 92 लिख दो, और 9 है तो 9/9। सी 92 9/9 इज सेम एज 93। 92 minus 42 50, 9 minus 5 4, so 54/9 is the answer।
54/9 is the answer. I hope it is clear guys now. हाँ जी, मजा आ रहा है? Are you enjoying guys? So I hope the concept is clear to you all. I'll give you one or two more examples so that finally you are happy. अब इसको अगर हमें करना है कैसे करेंगे? पहले मैंने बोला 8 को देखो, इसको एक कम करो तो 1000. 8 है, 8/8 लिख दो. Clear? 1000 minus this 800. 8 minus 5 3. Answer आ गया. I hope now everybody is clear यार. I hope everybody is clear. सबको clear हो गया होगा guys. इशिका बेटा आपको clear हुआ? Is it clear everybody? And those who have joined late, please refresh and go back and stream. Then you will follow what we are doing. Because if you have joined late, maybe you will. किसी को doubt है guys? Anybody has any doubt? Okay. So one last example I'll give this. 19532 minus 51 say 5/9. So the rule is जो भी नंबर होता है यहां एक कम करके लिखो. So 1951 लिख दो. सेकेंड इज जो फ्रैक्शन में आता है सेम बाई सेम, बस ये करना है. तो इसका मतलब है यही -51 as it is 5/9. Now what is 1951 minus 51? 1900. Finished. 9 minus 5 4. So answer is इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1900 4/9. अब तो क्लियर हो गया गाइस? चलिए okay, that's it. Now we'll go ahead with some important vocabulary words and maybe capitals and things like that. So this is an important question. आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, मेडिसिन की बात चल रही है, तो क्वेश्चन है who is father of medicine? None other than Hippocrates. So Hippocrates is father of medicine. अगर हमको याद करना है कि भाई फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स, तो कैसे ये नाम याद करेंगे वो बताओ. ठीक है, हाउ विल यू लर्न फादर ऑफ मेडिसिन कौन है. ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है अगर मुझे याद करना है बच्चों, हम कैसे याद करेंगे वो देखो. आई होप आपने हिप्पो का नाम सुना होगा, हमारा हिप्पोपोटामस. हिप्पोपोटामस के बच्चे बीमार हो गए कोविड से. आजकल लायंस टाइगर्स को कोविड हो रहा है, तो उसको भी बच्चों को बीमार हो गए. अब वो निकल गए दवाई लेने, ढूंढ के आए, और बच्चे बेचारे परेशान. ये छोटू छोटू बच्चे, ये छोटू छोटू बच्चे, और ये बड़े बड़े पापा. हिप्पो गया इनके लिए मेडिसिन लाने. अब मेडिसिन खा के आ गया और कहता स्टोर कर लूं, तो वो आता है, हिप्पो आता है. और आपने क्रेट देखा है ना, पेप्सी का क्रेट, कोक का क्रेट, क्रेट के ऊपर बैठ के मेडिसिन निकालता है अपने बच्चों के लिए. हिप्पोक्रेट्स. सो लेट्स हैव अ वॉच ऑन दिस. हु इज फादर ऑफ मेडिसिन, एंड जस्ट हैव अ यूनिक लुक. फादर ऑफ मेडिसिन. Name is Hippocrates. That is, Hippocrates is known as father of medicine.
So now you understand who is known as father of Hippocrates, and that is how we got father of Hippocrates, right? Right. So we did conjugal with you guys, and let me see which country is this. Okay. We'll do one more important country, Belgium. Belgium cockpit of Europe. यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, और उसका कैपिटल है ब्रसेल्स. सो द कैपिटल इज ब्रुसेल्स. अब होता क्या है, अब आप लोग आजकल कोविड में घर पे हैं, आपके स्कूल में बहुत बड़ा जिम्नेजियम बन गया है. आप लोग जब जाएंगे तो आपको मिलेगा बहुत बड़ा जिम्नेजियम. सो एक बैल होता है, खेतों में रहता है बैल. यू नो व्हाट इज अ बैल? ऑक्स. उस बैल को पता चलता है कि स्कूल में जिम बन गया और कोई यूज नहीं कर रहा, तो ये बैल जिम करने आता है, और जब आप लोग लौट के आते हैं तो आपको ब्रश दे दिया जाता है. सो ब्रुसेल्स जब चॉइस में आएगा, आप ब्रश से पूरा जिम साफ कर रहे हैं. सो ब्रश विल रिमाइंड यू ऑफ ब्रसेल्स. सो दैट इज द कैपिटल ऑफ Belgium. That is Bell going to a gym. Bell going to a gym. Right? अब आपको कभी नहीं भूलेंगे, बेल्जियम आते ही बेल गोइंग टू ए जिम, और उसके बाद यू नो दिस कम्स एज अ, सो यूर साफ कर रहे हैं ब्रश से, and brush will remind you of Brussels. Okay. Okay, we'll go to one more important country, guys. I don't know I have left it or not. So let me do it this one. Okay, we have done this one. Very recently, there is a country which is in news. Antigua. This is a country in Caribbean island where one of our fugitive, Mr. Mehul Choksi, took citizenship to hide. He did a scam of 13,500 rupees, नहीं crores. Yes, you heard it right. 13,500 करोड़ का स्कैम करके ये भाग गए. और एंटीगा का कैपिटल है सेंट जॉन. एंटीगा का कैपिटल है सेंट जॉन. सॉरी, दिस इज द कंट्री. दिस इज द कंट्री और ये है कैपिटल. ठीक है. और वहां के प्राइम मिनिस्टर को जब पता चला कि भैया ये हमारे देश में आ गया इंडिया का फ्यूजिटिव, तो वो गैस के सामने गुस्से से ब्राउन हो गए. गैस्टन ब्राउन वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, गैस्टन ब्राउन. तो गैस ऑन हुई और वो ब्राउन हो गए, गुस्से से लाल लाल. तो अब हम इसको याद करते हैं अपने स्टाइल में. एंटीगुआ, एंटीगुआ गई, एंटीगुआ गई. और गोवा में कौन से चर्च गई? सेंट जॉन चर्च. आंटी सेंट जॉन चर्च पहुंच गई. कहां पहुंच गई? सेंट जॉन चर्च. एंटीगुआ गई और कहां पहुंच गई? सेंट जॉन चर्च. और वहीं पे देखा चर्च के बाहर एक आदमी गैस ऑन करके ब्राउन हो रहा है. वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं गैस्टन ब्राउन. आइए देखते हैं. Capital of Antigua.
Antigua. So that is capital of Antigua for you guys, and this is for lifelong memory. Long term memory में images ही जाती हैं, nothing else goes, right? So that is what the thing is, you know, be it calculations, be it multiplication. So we cover what all I'll tell you. I'll tell you what all you can learn, right? So squares we can do mentally 1 to 1000. Cube roots, cubes 1 to 100. Cube roots up to 1 crore. Multiply any number जो आपके काम का है. मेंसुरेशन में स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब चीजें आ जाएंगी. वोकैब 5000 words, right? And we'll be sharing a very important clipping for you guys, right? We'll be sharing a very important clipping, and right now I'm going to show you a video wherein we'll show how a KG student was trained by me, right? How a KG student was trained by me, and I'll just show you that how a KG student was trained by me, right? So I'll just show you that how a KG student was trained by me, and you all are so importantly big, आप लोग तो बहुत easily सीख लेंगे. जोकोविच का मैच रहा. So just watch this clipping and then Capital of Gujarat. Doing that questioning to public school and what my children when they go to class 1. Yeah, just a minute, yes. I'm going to ask her some questions and be shocked. I myself was shocked. Okay, now stand. So I'm going to ask her some capitals. Capital of Gujarat. Wow, keep standing. Nagaland. Tripura. Arunachal Pradesh. These are all the then I will see some countries. Australia. Denmark. Oh. Sweden. Venezuela. Oh, I don't know if I was to ask my teachers and myself, so many of them, and you we were not knowing. So this is the memory training that we can do, and we will see how we can do it for our children. There are some more. Prime Ministers of India. The second Prime Minister of India. The ninth Prime Minister of India. The 11th Prime Minister of India. 14th Prime Minister of India. Indra. Elements with atomic numbers, which I think is too much, but she knows them. okay guys, so this was the thing. She knows entire world capitals, entire periodic table and all, right? So this is all we can do, and we have a separate memory channel for this. I'm sharing a link with you guys. Have a look at one of the videos, right? And that
channel is exclusively where we do memory and shortcuts. So if you all liked, please subscribe, and in case you want me to do this session once a week, then I'll do in a structured way for you, doing calculations, vocabulary and everything in a structure. Today we just had every topic picked from here and there just to explain how things can be. So now Albania ka capital Tirana, Venezuela car and cash, Antigua, you know that, right? Conjugal, the word meaning was there, right? Father of medicine, Hippocrates, right? There are many more things which we can do. Entire vocabulary, social studies learning, anything related to learning, we can do that. And if you want, once a week we can do this classes absolutely free and only for you students, right? I hope you all guys enjoyed. Watch one of the funniest video if you you would have come across against studies. So I've shared the link. Just watch the video, enjoy it guys, and it was nice to have you all. I know मस्ती हम सब करते हैं थोड़े messages में, और ये सब कुछ चलता है यार. Life should be fun, study should be fun, and I thank the school authorities once again for giving us an opportunity for this unique session wherein we could come and do it with you, right guys? And if you want, you can subscribe, like. We keep on having these sessions once a week, every day. You'll find a lot of videos where we do it, right? This is Keshav Agarwal signing off. Bye guys. Thanks a lot.